Now we are starting with 1.4, structure of anatropous oval. Now what's the meaning of oval? Oval is nothing but a female reproductive part of a flower. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गाइनोशियम. गाइनोशियम के अंदर हमने देखा था दैट गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ सो मेनी कार्पल, देन कार्पल्स कंसिस्ट ऑफ मेन पार्ट व्हिच आर फॉर्मिंग फीमेल गैमेट दैट इज नथिंग बट द ओवरी. और ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा प्लांट में वो यानी पार्ट यानी ओवल. सो नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवल एंड हाउ द ओवल इज फॉर्म. ओवल का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम लोग इस पार्ट में देखेंगे. Now we will starting with that 1.4 structure of anatropous oval. Now each oval develops inside a ovary. Oval का production कहाँ पर होगा? So ovary के अंदर, because we have seen that gynoecium के अंदर जो ovary होता है ovary के अंदर ही oval होता है. So ultimately that oval it is formed inside a oval and it is attached to a placenta by a stalk called funiculum. Now you can see in this picture, okay, ये रेड वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकल्स? जैसे हम लोग ह्यूमन का बेबी का डेवलपमेंट होता है तो ह्यूमन के बेबी जो एम्ब्रियो होता है और मदर इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, दोनों के पार्ट से कुछ पार्ट शेयर होता है दैट इज प्लांट. वैसे ही प्लांट के अंदर भी कुछ पार्ट शेयर होता है दैट इज कॉल्ड इट एज अ प्लांट. नाउ दिस ओवल, ये जो पार्ट है ये ओवल का पार्ट है. सो द ईच ओवल डेवलप इनसाइड ओवरी एंड दिस ओवरी इज अटैच्ड टू अ प्लासेंटा. ये जो ओवरी है ये प्लासेंटा से अटैच होता है और उसके लिए जो कनेक्शन है जो अटैचमेंट है दिस पार्ट इज कॉल्ड इट एज अ फ्यूनिकल. सो नाउ कैन सी दैट पिक्चर, आपको क्लियरली ये पिक्चर दिख रहा होगा. ये प्लासेंटा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओवल्स है और ये ओवरी और प्लासेंटा इन दोनों को जो अटैच कर रहा है ये स्टॉक लाइक स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड इट एज अ फ्यूनिकल. Now we will start with the next part में क्या है? The place of attachment of funiculum with the main body of the oval is called hilum. Now you can see in this picture, ये पूरा का पूरा oval ovary है, okay, oval है. So ये जो oval है इसको प्लासेंटा से अटैच होना है और इसके लिए हेल्प करा है फ्यूनिकल. बट ये ओवल का पूरा पार्ट अटैच हो रहा है क्या? नहीं. So the part of oval which is attached to the funicle, okay, a part of oval which is attached to the funicle is called it as a hilum. So you can see that ये इतना बड़ा ovals के अलग अलग पार्ट में से ये जो इतना पार्ट है that is called it as a hilum. So ये पार्ट क्या होगा? funicle से attached. So the part of oval which is attached to the funicle, जो कि funicle से attach होने के लिए help करेगा, so this part is called it as a hilum. Now the next, in angiospermy, the most common type of oval is anatropous oval, in which micropyle is directed downward and it is present attached adjacent to the funicle. You can see in this picture. Normally यहाँ पर क्या दिया है देखो, angiospermy plant. You know that the plant which having a flower and fruit bearing plant, that is called it as the angiosperm. So most of अगर हम लोग एंजियोस्पर्मी प्लांट का ओवल का स्टडी करेंगे तो वहां पर नॉर्मली क्या होता है, जो माइक्रोपाइल एंड होता है. माइक्रोपाइल एंड यानी कि जहां से जो हमारा ये पार्ट होता है मेल का पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब जहां से एंटर होता है इस ओवल के अंदर, दिस पार्ट जो ओपनिंग वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रो. So in anatropous oval, okay, micropyle end is directed down. You can see that जो lower वाला downward वाला जो opening का part है this is called it as a micropyle. So anatropous oval में ये part हमेशा downward direction में ही होगा और ये किसके adjacent में है देखो, so it is nearby to the funicle. ये जो फ्यूनिक्यूल है या तो फ्यूनिक्यूलस है इसके क्या होगा, nearby ही रहेगा ये micropyle. So this is all about this. Now we'll see the next part in this part, structure of anatropous oval. The oval consists of central parenchymatous tissue. ये जो भी oval है, you can see in this picture. So this oval in a center, इसके center में जो part है, so the central part consists of parenchymatous tissue and the nucellus which is surrounded
usually by two protective covering called integument. You can see that in this picture आपको ये जो part मिल रहा है, this is called it as oval का main part है, central part है, which will consist of parenchymatous tissue. Okay, और ये जो part है देखो ये this is called it as a nucellus. इसका ये जो covering है this is called it as a nucellus. एंड न्यूसेलस के ऊपर फिर अगर हम लोग अपर साइड में देखेंगे सो यू कैन सी दैट देयर इज अ टू प्रोटेक्टिव कवरिंग. देखो ये एक है सिंगल और ये सिंगल, so there is again a two protective covering around a nucellus. This is called as the integument. Okay, so फिर integument में दो पार्ट, एक outer integument and one is the inner. So you can see in this picture ये जो inner side में है that is called as the inner integument and outer side में जो है that is called as the outer integument. Okay, so inside a oval there is a parenchymatous tissue. Parenchymatous tissue जो भी है so इसके अराउंड में न्यूसेलस है और न्यूसेलस के ऊपर टू प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरग्यूमेंट. और इंटरग्यूमेंट में दो पार्ट, जो आउटर साइड में है दैट इज कॉल्ड एज द आउटर इंटरग्यूमेंट which you can see in this picture, और जो inner side में है that is called as the inner integument. Now a narrow opening at the base of oval is called as a micropyle. ये जो oval है इसके अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नैरो ओपनिंग है जहां से क्या होगा, तो आई टोल्ड यू दैट इसी पार्ट से क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब होता है वो ओवल के अंदर एंटर होता है फर्टिलाइजेशन. So this opening, narrow opening at the downward side is called it as a micropyle. Now next part, chalaza. Now what's the meaning of chalaza? Chalaza is the base of oval directed opposite to the micro. Means ये वाला जो opening का part है downward direction में that is called it as a micropyle. Micropyle के देखो बराबर opposite side. देखो मतलब ये जो structure है कैसे रहेगा, ये तो उल्टा दिख रहा है बट नॉर्मली ऐसे समझो. सो जो बेस वाला पार्ट है इसका बेस जो पार्ट है वो कहाँ पे आएगा, इस साइड में. ओके, सो द बेस ऑफ ओवल इज डायरेक्टेड अपोजिट टू माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल के अपोजिट ये जो बेस वाला पार्ट है ओवल का, दिस इज कॉल्ड एज अ चलाजा एंड और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ चलाजा. सो दिस इज ऑल ऑफ. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, embryo sac. Now what's the meaning of embryo sac? Embryo sac is a female gametophyte and is oval multicellular structure embedded in a nucellus. You can see that ये जो इंटरग्यूमेंट के बाद में जो एक कवरिंग है that is called as the nucellus, और न्यूसेलस के अंदर जो मेन पार्ट है जहां पर हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, so now जो प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मेगास्पोरो है उसका फॉर्मेशन होता है. सो दिस मेन पार्ट इनसाइड अ न्यूसेलस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो साक, जो कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. ओके, सो यू दिस पार्ट इज कॉल्ड एज जो ग्रीन कलर का आपको ये इतना पार्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट 1.4 स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल.